Okay. Guys, just give me a minute, okay? Just give me a minute. Back. Okay, sure, it's not a problem. Sorry about that. No, please. In the last lecture, we did all the questions from the first order reactions, right? Now, write the heading pseudo first order reaction. All the best, Fahad. अब इसमें क्या बोले आपको बताइए. फहद का भाई 13 अक्टूबर को एग्जाम है, फुल सिलेबस. तो बाकी सभी लोग से गुजारिश है कि दुआ करें फहद के एग्जाम के लिए, है ना फहद? डाउट्स वगैरह हैं तो आप भेजिए हमको, ठीक है ना? 13 कौन सा भाई? 13 नवंबर ना, आई गेस. फहद 13 नवंबर खत्म हो पाएगा कब तक? सी, केमिकल काइनेटिक्स आपके पास कोऑर्डिनेशन वगैरह बच रहा है. नहीं, 13 तक तो कंप्लीट नहीं होना थोड़ा मुश्किल है. बायोमोलिक्यूल्स आई एम डूइंग इन द फ्राइडे क्लासेस, बट पता नहीं आप आए थे कि नहीं आए थे. एंड मेन चैप्टर अमीन्स कोऑर्डिनेशन डीएनएफ ब्लॉक, अमीन्स कोऑर्डिनेशन एंड डीएनएफ ब्लॉक ना. तो कोऑर्डिनेशन तक हो जाएगा. आई कैन नॉट से अबाउट डीएनएफ ब्लॉक वगैरह, ठीक है. 13 तक होपफुली, हाँ 13 तक कोऑर्डिनेशन कंप्लीट हो जाएगा आपका. तो आपके पास जो बचेगा दैट विल बी डी एंड एफ एंड अमीन्स बचेगा आपका. अमीन्स के 2 लेक्चर होते हैं जनरली, ठीक है. 2 लेक्चर में अमीन्स कंप्लीट हो जाता है. आप अगर रिकॉर्डिंग चाहें तो आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, ठीक है. बायोमोलिक्यूल्स की क्लासेस फ्राइडे फ्राइडे लग रही हैं तो वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है. चलिए, that is pseudo first order reaction. क्या होता है pseudo first order reaction? As you can see by the name itself, they will not be actually first order, but वो behave करेंगे first order की तरह, है ना. जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा pseudopodia होता है एक चीज, राइट? 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने pseudopodia. Anyone remember pseudopodia? Yes, sir. Yes, what is pseudo? अच्छा इरम, आपको तभी होगा ना. हाँ, क्या होता है pseudopodia? False beat होता है अमीबा के. हाँ, वो आलगे के क्या होते हैं? नहीं, किसका? अमीबा का ना. Yes. But they are not actually hand, but they act as hands, right? वही होता है शायद. पोडिया, I don't know. That's what I remember. The reaction which is not truly first order, but under certain conditions it becomes first order. It becomes first order. The reaction is called first order reaction, ठीक है.
अच्छा, व्हाट इज द कंडीशन इन विच इट विल बिकम फर्स्ट ऑर्डर? जैसे कि एग्जांपल आपको ले लें, सपोज वी हैव ए प्लस बी गिविंग यू प्रोडक्ट. डोंट राइट दिस रिएक्शन, जस्ट दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है ना, इसके अलावा कुछ और नहीं. ध्यान दीजिए. इफ आई टेक, आपने ए लिया है लेट अस सपोज 10 मोल्स, और आपने बी ले लिया है 10 टू द पावर 3 मोल्स. ठीक है, 10 टू द पावर 3 मोल्स. एंड लेट अस सपोज ये रिएक्शन जो है ना इस तरह बिहेव करता है, दैट रेट विल बी इक्वल टू के इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ बी. दैट मींस इट इज एक्चुअली सेकंड ऑर्डर में. ठीक है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखा ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 बी टू द पावर 1. अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर हमने इफ आई हैव टेकन 10 मोल्स ऑफ ए एंड 10 टू द पावर 3 मोल्स ऑफ बी, now tell me if I increase the amount of B, if I increase the amount of B furthermore, कि हमने 10 to the power 3 से यानी कि 1000 मोल्स था ना, हमने क्या किया 1000 से 1010 कर दिया. ठीक है, 1010. तो क्या कुछ रेट में असर पड़ेगा? बताइए, क्या कुछ रेट में असर पड़ेगा? विल द रेट चेंज? विल द इंक्रीजिंग ऑफ बी, क्या कुछ रेट में चेंज पड़ने वाला है? आपके पास 1000 था, आपने 1000 से 1010 कर दिया, तो देयर विल बी सिग्निफिकेंट चेंज या इनसिग्निफिकेंट चेंज इन द रेट? बोलो भाई, क्या ख्याल है आपका? सिग्निफिकेंट चेंज आएगा. इफ आई एम गोइंग टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन फ्रॉम 1000 टू 1010, बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन में. अच्छा चलिए ठीक है, हम दो कंडीशन दे रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा. जब आप समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा आप लोग को, जवाब भी नहीं आ रहा किसी का. देखिए, दो कंडीशन लेते हैं, ठीक है ना. ए आपके पास है 10 मोल, बी आपके पास है 10 टू दी पावर 3 मोल. ठीक है, इस टाइम एक रिएक्शन हो रही है, दिस इज योर, ये हमारे पास स्टैंडर्ड रिएक्शन जिससे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं. ठीक है, जिससे हम लोग कंपेयर करने वाले हैं. एक केस में हमने क्या किया, एक केस में हमने किया 20 मोल्स ऑफ ए और इसको सेम रखा 10 टू दी पावर 3 मोल्स ऑफ बी. ठीक है, सेकेंड केस में इसको हमने 10 मोल रखा और इसको हमने 1010 मोल कर दिया. बताइए, इन विच ऑफ द केसेस देयर विल बी इन विच ऑफ द केसेस देयर विल बी सिग्निफिकेंट चेंज? ज्यादा बढ़िया चेंज कहां दिखेगा आपको, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में? देख के बताएं, कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर केस, ये इनिशियल वाला केस जो है, स्टैंडर्ड केस के अलावा इसमें ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा गाइस? हाँ, लेकिन जो केस वन कह रहे हैं वो ज्यादा सही होगा, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग, सॉरी, जो केस वन कह रहे हैं ना फर्स्ट केस, उसमें हम लोग वी आर डबलिंग द अमाउंट ऑफ ए ना, और बी का अमाउंट तो बस 10 मोल से इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, सो आपको अगर 1000 रुपया देना है किसी, आपको मान लीजिए आपको किसी ने उधार दिया 1010 रुपए का, आप उसको 1000 रुपए भी देगो तो चल जाएगा, है ना. आप उसे 1000 रुपए भी दोगे तो चल जाएगा, बट आप आपसे आपने किसी से लिया हुआ 20 रुपए, आप उसको दोगे 10 रुपए तो वो नहीं चलेगा. ठीक है, दैट इज वाई दिस चेंज विल बी वॉट वेरी इनसिग्निफिकेंट. यहाँ पे अगर आई एम गोइंग टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ बी, बेसिक सी बात यह है कि जो चीज एक्सेस में होता है उसके कंसंट्रेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है. सो व्हाट इज द मेन थिंग टू अंडरस्टैंड, जो आपके पास असल चीजें समझने की वो ये है, प्लीज राइट हियर, the concentration of reactant present in excess does not affect the rate, and hence it is not considered in rate equation. Therefore if in a bimolecular reaction the concentration of one reactant is taken in excess, then the reaction becomes first order.
Write this down, raise your hand once you're done. Okay, guys, please raise your hand once you're done. Arif, I think you're still writing. जल्दी लिखें, जल्दी. Those who are done, they will write an example. एक जो example है आपके पास इस तरह का reaction है, that is hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester जो होती है, वो होती है आपके पास, you have ester plus H2O water, and it is going to give you carboxylic acid plus alcohol. So generic reaction जो आपको लिखना है, that will be R, C double bond O, OR dash plus H2O is going to give you R, C double bond O bonded to OH plus R dash OH. अगर आपको specific reaction लिखना है, then the specific reaction that you can write is, you can have 1-2 carbon atoms, double bond O, and then OCH3 plus H2O is going to give you 2 carbon atoms, double bond O with a OH plus CH3OH. So copy this down. Raise your hand once you're done. Guys, please raise them. Okay, Tarif and Shahid waiting for you guys. Tarif, Shahid, Iram, your camera is not on. Shahid, your camera is off now. Fahad waiting for you also. Tarif and Fahad. अच्छा, यहाँ पे चीज ध्यान रख दीजिए जरा. अच्छा, ये हमने लिखना भूल गए. यहाँ पे प्लीज लिख लीजिएगा दैट वाटर इज इन एक्सेस. ओके, वाटर आपके पास एक्सेस में होता है. माय बैड गाइस, ये हम बताना ही भूल गए आप लोगों को. वाटर इज इन एक्सेस.
Get a question? A reaction A plus B giving product is found to have found to follow the following question is determine the order. Determine the order of reaction B is taken in excess. Taken in excess. बताएगा इस What will be the determine the order of reaction if B is taken in excess? अरे अभी तो बताया था अभी तो किया ना हमने What is the rate equation? Rate equation आपके पास है R K to the concentration of A to the and B to the power 2. हाँ करेक्ट. तो जब आपके पास शावेज शाहिद एंड फरहान सही सही जवाब. जो चीज एक्सेस में होती है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते. तो क्या बचा बस हमारे पास रेट इक्वेशन में. रेट इक्वेशन बचा R is equal to K into the concentration of A to the power 1. सो ऑर्डर क्या हो गया. ऑर्डर इज इक्वल टू 1. दैट्स इट. बात समझ में आई. अरे बोलो भाई. हाँ बोले जनाब. यस और नो. इरम तारीफ तारीफ समझ में आया. तारीफ खोए खोए लग रहे हैं आप इस चैप्टर में. जल्दी कॉपी कीजिए. I think everyone has written. Now write the topic that is very important. Collision theory. यार आज आप लोगों का ना कुछ आवाज ही नहीं आ रही किसी की भी. आपके सब माइक भी नहीं है क्या शावेज आज. शावेज डू यू हैव माइक. और माइक भी नहीं है. यस शावेज. किसी की आवाज नहीं आ रही है. बताओ क्या पढ़ाए हैं. लिखो तो लिखो लिखो.
तो आज हम पढ़ाएंगे नहीं, आज लिखाएंगे, आप लोग जल्दी लिखिए, स्टार्ट हो जाएगी। कॉलिजन थ्योरी, प्लीज राइट। फर्स्ट पॉइंट, देयर मस्ट बी collisions taking place there must be collisions taking place between reactant molecules but every collision is not fruitful. Every collision is not fruitful, and only a small number of collisions are effective and bring about chemical reaction. Next point, the minimum amount of energy required by a reactant molecule for effective collision is called threshold energy. It's called threshold energy. Next point लिखिएगा, there must be proper orientation between the reactant molecules for effective collision. ठीक है. Now what will be the conclusion from here? The conclusion will be collision theory की conclusion क्या है? तो first conclusion is necessary condition for effective collision are number 1, proper orientation, and second is threshold energy. ठीक है, दो चीजें हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी. बोथ ऑफ दीज आर इंपॉर्टेंट. अगर एक हुआ दूसरा नहीं हुआ तब आपका रिएक्शन जो होगा दैट विल बी वेरी स्लो. So on this particular basis, there was a question asked many years ago. The question said, please write,
इन सम रिएक्शंस, हम टाइप कर पाएंगे, बहुत लंबा रिएक्शन। सवाल बोल रहा है, इन सम केसेस द रिएक्शन इज फाउंड टू बी स्लो even if large number of colliding molecules have energy higher than the threshold energy. Why? Higher than the threshold energy. Why? तो सिंपल सा जो इसका आंसर है, देखिए, you have to answer on the basis of information that you have and you have been given. एक तो आपके पास information होनी चाहिए about this, that necessary condition for the effective collision for the reaction to occur is what? Proper orientation as well as threshold energy. Now what they are saying that कि हमारे पास जो reacting molecules है, colliding molecules है, they are having like large number of them are having energy that is higher than the threshold energy. फिर भी reaction slow क्यों है? There is only one reason reaction slow होगा, क्योंकि because proper orientation नहीं होगा. So your answer will be due to improper orientation of colliding molecules. ठीक है, write this down. नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग क्वेश्चन ओरिएंटेशन. चलिए ठीक है, सवाल किया आपने तो हम बताते हैं आपको. आज नहीं तो भाई आप लोगों को तो मूड भी नहीं लग रहा है, तो जवाब ही नहीं देकर. ध्यान ध्यान से देखिए, ध्यान से. दो तीन केसेस ले रहे हैं हम, ठीक है ना, उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा व्हाट इज प्रॉपर ओरिएंटेशन, होपफुली. देखिए गाइस, in the first case what is happening, this reacting, this green reacting molecule, I am only moving this, it is colliding like this to the blue, to the red one. ठीक है, इस तरह से हेड ऑन कोलिजन हो रहा है बिल्कुल, ठीक है, इस तरह से कोलाइड कर रहा है, ठीक है. और दूसरा अगला जो हो रहा है वो बस ऐसे टच करके निकल जा रहा है, ऐसे टच करके निकल जा रहा है, ऐसे टच करके निकल जा रहा है, ठीक है. We have two cases ना, we have A case in which there is head on collision, B case में आपके पास what is happening, the collision is taking place, but this is not colliding, अच्छे से नहीं हो रहा है, ऐसे टच करके निकल जा रहा है. तो बताइए कौन सा collision अच्छा होगा, which is having proper orientation? Shaviz tell me which is proper orientation? A1 है ना. I hope this is clear for everyone. और इसमें हम बताते हैं. मान लीजिए ए में ये वाला साइड जो है रिएक्टिव है, which I am shading, है ना, दिस साइड इज रिएक्टिव, और बी में ये वाला साइड रिएक्टिव है. ठीक है, अब बताइए इवन इफ ए इज कोलाइडिंग लाइक दिस, इफ ए इज कोलाइडिंग लाइक दिस, तब भी क्या रिएक्शन होगा? बोलिएगा इस चलनी. इफ ए इज कोलाइडिंग लाइक दिस, इस तरह से कोलिजन हो रहा है ए केस में ग्रीन एंड रेड एटम्स में, देन विल द रिएक्शन टेक प्लेस? नो, है ना. बट वही अगर हम बोले दैट इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस लाइक दिस, फ्लिप वर्टिकल,
और उसको भी फ्लिप कर देते हैं वर्टिकल। अब बोलिए, नाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस, यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस ऑल ऑफ यू, नाउ द रिएक्शन विल अकर, हाँ या ना? ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट इज प्रॉपर ओरिएंटेशन, यस और नो, प्लीज टेल मी। सबको समझ में आया ना प्रॉपर ओरिएंटेशन? चलिए ठीक है। अरे भाई जब तक आप लोग बातचीत नहीं करेंगे ना, हमको पढ़ाने का मेरे बिल्कुल मन नहीं रहता ऐसे। ठीक है, अब जवाब जैसे ही आएगा जब सवाल, तो फिर हम देंगे आप लोग आगे जवाब। ठीक है, प्लीज राइट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू collision theory, according to collision theory। ठीक है, according to collision theory, if I am having a plus b, it is giving you some product p, then the rate of reaction is equal to rate of reaction is equal to p multiplied by z of ab into e to the power minus ea upon rt। अब ये सारी क्या क्या चीजें हैं वो हम आपको समझाते हैं। ea upon rt। ठीक है, I will explain each of these terms, don't worry about it। ea upon rt is in the power में है यहाँ पे। So what is p first of all? So p is the probability or steric factor, probability or steric factor, and probability or steric factor it will lie, probability कहाँ से कहाँ तक lie करता है बताइए? What is the minimum and maximum value of probability? मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फॉर प्रोबेबिलिटी, शायद करेक्ट, हाँ शायद करेक्ट, वेरी गुड। सो कितना होगा? 0 से 1 तक ही होगा, 0 टू, ठीक है। व्हाट डज इट डिनोट, प्रोबेबिलिटी और स्टेटिक फैक्टर? इट डिनोट्स कि अगर आपके पास 100 कॉलिजन्स हो रहे हैं तो उसमें से कितना फ्रूटफुल है। 100 में से मान लीजिए 10 फ्रूटफुल है तो कितना हो गया? दिस विल बी 0.1, प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना आ गया? 0.1 आ गया। इज दैट क्लियर? यस और नो, प्लीज टेल मी। 100 बार कोलाइड कर रहा है लेकिन उसमें से 10 बार प्रोडक्ट बन रहा है। बात समझ में आई? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेटिक फैक्टर? अरे बोलो भाई, बोले गाइस, समझ में आया नहीं आया? प्रोबेबिलिटी और स्टेटिक फैक्टर, ठीक है, आप लोगों को निकालने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज जेड? जेड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन, कितनी बार कोलाइड हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, दैट इज जेड इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन। नाउ ई इज द कांस्टेंट, ई ए जो है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट and T is equal to temperature। Now we will learn a new term that you have understood. What is activation energy? Activation energy is actually related to threshold energy, आप समझ सकते हैं उसको, ठीक है। Threshold energy actually वो नहीं होता है, but you can understand the most related term that you can have, it is activation energy और threshold energy। तो threshold energy अगर बढ़ती है तो activation energy भी बढ़ती है, ठीक है। So if the activation energy is high, then the exponent will be more negative. If the exponent is more negative, this value will be very less. If this value is very less, the reaction will be very slow, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी का रिलेशनशिप है रेट ऑफ रिएक्शन से। कि अगर आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। विल अंडरस्टैंड एक्टिवेशन एनर्जी इन ग्रेट डिटेल राइट नाउ, बट अभी आप इसको लिख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉलिजन थ्योरी। राइट दिस डाउन, लेट मी नो वंस यू आर डन बाय रेजिंग योर हैंड। Waiting for Tarif and Chavez. Tarif, Chavez and Fahad. Waiting for Tarif, Chavez and Fahad.
I think Fahad is already done. Activation energy. लिखेंगे टॉपिक activation energy. ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? इट इज द एक्स्ट्रा एनर्जी required for the reactant molecules it is the extra energy required for the reactant molecules to achieve the threshold energy. ठीक है, so activation energy is denoted by EA. this is equal to क्या होता है? the threshold energy minus the energy that is average. एक reactant molecule, there will be many reactant molecules, and the reactant molecules they are going to have what? An average energy. ठीक है, एवरेज एनर्जी होगी, और एवरेज एनर्जी को सब्ट्रैक्ट लीजिए थ्रेशोल्ड एनर्जी से. ठीक है, तो यू विल गेट द एक्टिव एनर्जी. फॉर एग्जांपल, इसको ग्राफ में भी समझेंगे हम लोग. देखिए यार गाइस, प्लीज सी. सपोज वी आर प्लॉटिंग फॉर, this is the energy that we are having, the potential energy of the reactant molecules in this axis. ठीक है, and here we are plotting for the, this is the reaction coordinate. reaction, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट बताएंगे. रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होता है वो भी बताएंगे. पर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है. सो पोटेंशियल एनर्जी आई कैन शो दैट, लेट सपोज रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी है अभी इतनी. ठीक है, दिस इज द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी. और थ्रेशोल्ड एनर्जी एक रिएक्शन के लिए है यहाँ पे कहीं पे, लेट सपोज दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी. ठीक है, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी. नाउ दिस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, इनकी एवरेज एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा. कहां तक ले जाना पड़ेगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी. उसके बाद ही रिएक्शन होगा. एंड व्हेन द रिएक्शन कैन हैपन, तो दो आपके पास केसेस बन सकते हैं. एक केस तो ये, दैट द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स इज लोअर देन दैट ऑफ रिएक्टेंट. एक तो ये केस हो सकता है, और दूसरा जो केस हो सकता है वो हम ये बता देते हैं आपको. ठीक है, तो देयर आर टू केसेस ना. एक में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा हो सकती है, और एक में प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम हो सकती है. बट इन बोथ द केसेस यू डोंट हैव टू वरी. अभी अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी की, सो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी ना, यहां से लेके यहां तक. whatever the energy that we require to reach threshold energy, this is your activation energy. ठीक है, this is your activation energy. ठीक है, this is your activation energy. Here also the activation energy is just the energy that you have to reach from the average energy of the reactant molecules to the threshold energy. यहां से यहां तक ये क्या है? This is your activation energy in this case also. अच्छा, और ये क्या है भाई? दिस रेड थिंग, ये क्या है आपके पास? दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स. और ये क्या है भाई? दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये भी यहाँ पे भी प्रोडक्ट हो गया, और यहाँ पे आपके पास रिएक्टेंट हो गया. दिस इज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का एवरेज एनर्जी. ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, जो कि है यहां से यहां तक. ठीक है, दिस एनर्जी, दिस इज नोन एज डेल्टा एच, द एंथैल्पी चेंज, डेल्टा एच. सिमिलरली यहां पे भी जो आपके पास होगा, दिस इज नोन एज डेल्टा एच. ठीक है,
All of you understood each and everything? Yes or no? Please tell me. अरे हाँ या ना कुछ बोलो यार, तुम क्या ही कर रहे हो। दूसरी चीज देख लीजिए, दिस पर्टिकुलर स्टेट जो यहाँ पे होता है, दिस इज द टॉप स्टेट है ना। इस पर्टिकुलर फेज में जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स इन दिस फेज, इट इज नोन एज द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं इसको। Just give me a second, please. Okay, note this down while give me a second. Note this down. Guys, raise your hand once you're done writing. Waiting for Tarif. Tarif, just waiting for you now. See here guys, ध्यान से देखिएगा इस केस में। इन द फर्स्ट केस इफ यू सी डेल्टा एच की अगर हम बात करें, डेल्टा एच की बात करें, सो दिस विल बी द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, है ना। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लोअर, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज हाइयर। तो आपको यहाँ पे हाथ से बिल्कुल आसानी से दिख रहा होगा, it is lower than the energy of reactant. अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, the delta H will be what, negative. Yes or no?
एंड व्हेन डेल्टा एच इज नेगेटिव तो इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एंड इन दिस केस द डेल्टा एच is what, again same thing. So delta H इस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, as you can see that the energy of product is greater than the energy of reactant and this will be endothermic. अब उसके बाद आखिरी चीज, what is reaction coordinate, why ER is greater than EP. भाई ये देखो ना भाई, प्रोडक्ट देखो यहाँ पे है ना, ये प्रोडक्ट का आएगा ना एनर्जी, ये एनर्जी आएगी ना प्रोडक्ट की, और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे है, तो रिएक्टेंट का ज्यादा होगा ना शायद, आई थिंक शायद यू आर यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट में भी, है ना, आप यहाँ पे ऐसे ऐसे देख रहे हो, उस वजह से दिक्कत हो रही है आपको. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड, एनर्जी आपके पास वाई एक्सिस में, अंडरस्टूड, ठीक है. अब बात आती है व्हाट इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट. एक्चुअली रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है उसको मेजर करने का एक टेक्निक है, ठीक है. सो द रिएक्शन प्रोग्रेस, की रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है, रिएक्शन कितना चल रहा है, उसको मेजर करने का कैसे. सो फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट a particular reaction in which I am having A and B and it is giving you a product which is AB, ठीक है. तो ध्यान दीजिएगा, AB का बॉन्ड होगा एंड दिस बॉन्ड विल बी सम बॉन्ड डिस्टेंस, मान लीजिए इसका बॉन्ड डिस्टेंस है आपके पास 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इट इज 10 एंगस्ट्रॉम. नाउ A आपके पास मॉलिक्यूल होगा, B मॉलिक्यूल होगा, राइट. सो व्हेन दीज आर नॉट बॉन्डेड देन ऑब्वियसली द डिस्टेंस बिटवीन A and B विल बी, इनिशियली अगर हम बात करें, इनिशियली the distance will be greater than 10 to the power 10 angstrom. And slowly what will happen, the distance will start to decrease, distance धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, and then it will reach eventually what, 10 angstrom. तो वही reaction progress को बताता reaction coordinate. In this particular case the reaction coordinate is going to be the bond distance, the bond length. A और B atom के बीच में जो distance है उसको measure करके हम क्या कर रहे हैं, we are measuring the reaction progress. So when the bond distance is equal to 10 to the is equal to 10 angstrom, तो हम बोलेंगे रिएक्शन कंप्लीट हो गई है. इज दिस क्लियर, व्हाट इज रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यस और नो, प्लीज टेल मी, तो बताएं गाइस. हाँ जी, क्या आप लोग को रिएक्शन कोऑर्डिनेट समझ में आया? जवाब ही नहीं आ रहा यार किसी का. yes, आया ना, ठीक है, चलिए ठीक है. रिएक्शन कोऑर्डिनेट आपके 12th स्टैंडर्ड केस के लिए ना उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम यही एक्सपेक्ट करते हैं शायद कोई बच्चा आगे जाके केमिस्ट्री ले ले, तो केमिस्ट्री जब आप लीजिएगा तो बैचलर्स में आपको केमिकल काइनेटिक्स फिर से पढ़ाया जाएगा इन डिटेल, है ना, कि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, क्या ट्रांजिशन स्टेट की थ्योरीज वगैरह है. तो उसमें वो मतलब टीचर्स में ऐसे पूछते हैं कि रिएक्शन कोऑर्डिनेट क्या होता है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, फिर आप अच्छे से जवाब दीजिएगा, ठीक है. यू विल राइट नेक्स्ट पॉइंट. हाँ, एक दो रिमार्क्स लिख लेते हैं पहले, प्लीज राइट रिमार्क्स. नंबर 1 पॉइंट, व्हेन activation energy is high, the reaction is slow. When activation energy is low, the reaction is fast. ठीक है, उसके बाद लिखिएगा, when colliding particles possess energy that is equal to activation energy, that is equal to activation energy, then the atomic configuration is called transition state or activated complex. ठीक है, क्या मतलब, जैसे कि let's suppose we have HI molecule, another HI molecule, these are reactant, both of these are reactant. एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास हाइड्रोजन और आयोडीन का बॉन्ड टूटने लगेगा, रेड रिप्रेजेंट्स ब्रेकिंग, ठीक है. हाइड्रोजन एंड आयोडीन बॉन्ड इज गोइंग टू बी, इट्स ब्रेकिंग राइट नाउ, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी, थोड़ा सा हमने उल्टा कर दिया, आई थिंक ऐसा रिएक्शन नहीं होता है, माय बैड गाइस, एक सेकंड.
यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड आयोडीन आयोडीन है ना, Hi plus I2 gives H2Hi. हाँ ठीक है. So you'll have hydrogen and hydrogen. This bond will be starting to break. And iodine iodine bond is also starting to break. Okay, this bond is also starting to break, and a new bond between hydrogen and iodine is starting to form. इस particular स्टेट को, इस एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. और उसके बाद यू विल हैव फर्दर रिएक्शन जिसमें आपको मिलेगा 2 moles of Hi. Please write this down. Let me know once you're done. Raise your hand once you're done. Shaviz done. Shaviz. शाविज ने क्या क्या हो गया. चलिए बहुत बढ़िया. अब लिखिएगा गाइस, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रिएक्शन. इसमें आप लोगों ने एक होमवर्क लिख लीजिए, आप लोग नोट्स में कीजिएगा. देयर इज अ टॉपिक छोटा सा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऐसे करके एक टॉपिक होगा. स्मॉल सा पैराग्राफ होगा ना, उसमें इस तरह का कोई ग्राफ बना हुआ होगा एक. ठीक है, तो उसको आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और उससे इस तरह का कुछ ग्राफ बना होगा उसे नोट कीजिएगा. ठीक है, रीड एंड मेक नोट्स ऑन इट. ज्यादा हार्ड नहीं है. अगर किसी को डिफिकल्टी सवाल वाल भी अभी तक नहीं आया उससे, ठीक है. एक्चुअली इट इज अ टॉपिक फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड एंड मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, शायद आपने ना इसको फिजिक्स में भी शायद पढ़ा हो. हैव यू गाइस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा है आप लोगों ने इसको? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस शायद 11th स्टैंडर्ड में है ना? नहीं? अरे बोलो भाई. KTG. ठीक है, तो वहां भी पढ़ा होगा आपने इसको. एक बार रीड कर लीजिएगा बस एंड मेक नोट, शॉर्ट नोट्स है ना, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है. राइट, नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तो है हाँ, केबी. जी जी, उसी से रिलेटेड.
So what are the factors that we have? We have already seen a few factors. First of all, हमने जो देखा सबसे बहुत ज़्यादा डिटेल में, that is the concentration of reactant, right? Concentration of reactant. Now, in concentration of reactant, we have seen that क्या देखा हमने? Rate increases on increase in concentration of reactant, है ना? ये चीज हमने देख लिया है. द रेट लाइक एक्सप्रेशन हमने ये चीज देख लिया. सेकंड पॉइंट है आपका फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स ना, या फिर इवन रिएक्शन कौन से स्टेट में हो रहा है उसको भी आप देख सकते हैं. थर्ड है टेम्परेचर, हाउ टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. फोर्थ है आपका कैटलिस्ट, जिसको हम लोग अभी आज डिटेल में पढ़ेंगे. फिफ्थ है आपका सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बारे में. सिक्स्थ है प्रेशर ऑफ गैस फॉर गैसियस रिएक्टेंट, प्रेशर ऑफ गैस फॉर गैसियस रिएक्शन. ठीक है. नाउ इसमें अगर इन जनरल हम बात करें तो इन जनरल वी कैन से दैट देयर आर फ्यू मेन कैटेगरीज यहाँ पे ना. एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपका कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको याद रखना है. टेम्परेचर इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं, जिसमें आपका कंट्रोल हो सकता है. एंड द अदर वन इज कैटलिस्ट, राइट? कैटलिस्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कैटलिस्ट किसी रिएक्शन के लिए अगर है मौजूद, इफ यू हैव सम कैटलिस्ट फॉर अ रिएक्शन, देन यू कैन यूज दैट कैटलिस्ट. नाउ दिस सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज ओनली, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द सॉलिड स्टेट. Pressure of gas for gaseous reaction is restricted for the gaseous state reaction. The physical state of reactant you cannot control ना, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते. Like if you have a reaction which is in aqueous state, तो you can do it only in aqueous state. You cannot go to some different solid or gas state, even if the other reactions are going to be faster. It is not feasible, right? If the physical state of a particular reactant is solid, liquid or gas, you cannot change it. बट हाँ, अगर फैक्टर्स की हम बात करें कि हम लोग किन किन फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं, भले ही वो फिजिबल हो नहीं हो अलग बात है. सो इन द केस ऑफ फिजिबिलिटी, इन द केस ऑफ जेनेरिक एप्लीकेशन ऑफ दीज फैक्टर्स, वी हैव थ्री मेन: कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट. Physical state we cannot alter it too much, है ना? We cannot depend on it too much. Surface area for solid, it is only restricted to solid. It's not going to be applicable for the gases and aqueous solutions. Pressure of gas is only restricted to for the gaseous reaction. It will be not applicable. Whatever factor we are going to learn there, it will be not applicable to solid and aqueous states. ठीक है. तो तीन फैक्टर्स आपको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है: कंसंट्रेशन, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट. ठीक है. और कैसे उनका वेरिएशन होता है. ठीक है. तो वी हैव सीन कंसंट्रेशन फॉर श्योर, पहले हम लोग ने देख लिया रेट ऑफ एक्सप्रेशन के मुताबिक. विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकंड पॉइंट, दैट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन. प्लीज राइट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन. Physical state of reaction. Reactant molecules या reaction जो भी आप लिख सकते हैं. Now here obviously बात है, सबसे पहले rate of homogeneous reaction, यानी कि reaction which is having same state of reactant molecules. सारे reactant molecules में same ही state के हैं. There is no phase transition happening here. Solid से solid बन रहा है, liquid से liquid, सारी चीजें, all of the reactant species and the product are in liquid state. All of them are in aqueous state. All of them are in solid state. So what will happen? You will not have to spend energy, or there will be no time taken for the phase transformation. Solid से liquid बनने में, like there is some energy, some time consumed when you have to convert from solid to liquid. So that won't be taking place. That is the rate of homogeneous reaction, in which each and every reactant species, each and every chemical species is in the same state, will be greater than that of rate of heterogeneous reaction. Rate of heterogeneous. Now, in the case of homogeneous reaction, हम लोग अगर देखें, in the case of homogeneous reaction, for homogeneous reaction, अब बात आएगी यहाँ पे, if you are looking only at homogeneous, यानी कि solid reaction, there is a reaction in which all the chemical species are in solid state. We will compare that with, there is a reaction in which all the reactant molecules and the chemical species are in liquid state, and another reaction in which all the chemical species are in gaseous state. Okay, so we have to compare this: solid, gas, and liquid. Now, obviously, in this case, the rate of reaction is going to depend on the colliding frequency, where there is more collision per unit time. Frequency का मतलब है, frequency का मतलब per unit time होता है, 1/t. So frequency means what?
how many reactions are happening per second, how many collisions are happening per second, that will determine the rate of reaction. Now, collision is directly, it is the function of the speed of the molecules. The speed is highest in gaseous molecules. वहां पे speed ज्यादा है, random is ज्यादा, that's why they will be colliding more frequently, and that is why their rate will be higher. So solid जो है, that will be slowest because उसमें speed कम होती है, they are not moving very fast, followed by liquid, and then followed by gas. ठीक है, तो gas is going to have the highest rate in the case of homogeneous reaction. Is this clear? Yes or no? जल्दी बताएं. अरे बोलो भाई. Yes or no, guys? Tell me. Yes, sir. Chat. Yes. Okay. Hiram, you back? You went somewhere? लिखिएगा temperature. क्या लिखिए? बहुत सिंपल सा केस है. As temperature increases, kinetic energy of reactants increases. ठीक है. Therefore, number of effective collisions also increases. ठीक है, which leads to increase in rate of reaction. ठीक है. अब टेम्परेचर का डिपेंडेंस जो है ना, वी कैन सी दैट rate of reaction rate is directly proportional to temperature. ठीक है. Now detailed analysis of temperature we will do in the next class by Arrhenius equation. So Arrhenius was a scientist who played with temperature for different reactions, है ना, टेम्परेचर कम करके बढ़ा करके, like then he found a particular equation जो आपके पास आज डिटेल में पढ़ना है हमें, that is fourth one, which is catalyst. टेम्परेचर का इफेक्ट जो है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कैटलिस्ट. देखिएगा, what is catalyst? Please write. Catalyst is a substance. Catalyst is a substance. Catalyst is a substance which increases the. Just give me a second, guys. Hello. I'm sorry guys. यार एक पार्सल आने वाला है, इस वजह से थोड़ा कॉल आ रहा है हमको. ठीक है ना. चलिए, what is a catalyst? A catalyst is a substance which increases the rate of reaction without undergoing permanent change. ठीक है. अगर आपके स्कूल वगैरह में इस तरह से कुछ लिखा दिया किसी ने ना, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस which increases the rate of reaction without taking part in the reaction, so that is not very correct. यार फिर से कॉल आ रहा है. हेलो.
हेलो। ओके, चलिए, सी हियर नाउ। हाँ, तो आई वाज सेइंग, अगर आपने स्कूल में ये लिखा ना दैट इट इज नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, तो दैट इज नॉट वेरी कंसेप्चुअली करेक्ट। भले वो मीन्स से एक चीज करना चाह रहे हो कि एक्चुअली वो परमानेंट चेंज नहीं आता, कैटलिस्ट को आप जैसे डालिए रिएक्शन में, इट इज गोइंग टू कम इन द प्रोडक्ट एज इट इज, बट इट डज टेक पार्ट इन द रिएक्शन। जैसे कैसे टेक पार्ट करता है रिएक्शन, वो हम आपको समझाते हैं। इफ आई एम हैविंग ए एंड बी, दीज आर टू chemical species reactant, this is both of these are very stable, ये भी आपके पास काफी स्टेबल है, ठीक है। देन ऑब्वियसली द रिएक्शन व्हिच वी वांट टू हैव, व्हिच वी आर गेटिंग ए बी, दिस विल बी वेरी स्लो, बिकॉज ना ही ए रिएक्टिव है ना ही बी रिएक्टिव है, बोथ ऑफ दीज आर अनरिएक्टिव एंड दे आर स्टेबल. So now here we are going to introduce catalyst. We will start with A, B, that is the reactant, and a catalyst C. Now what the catalyst has to do, now this catalyst is going to be very reactive. It is going to be reactive. और catalyst के पास ना it will have, जो वैलेंसी होगी इसकी, it will have multiple valencies, ताकि वो एक बॉन्ड दो बॉन्ड जैसे भी बॉन्डिंग हो रहा है उसको कर सके. And that is why you will see transition metal elements are used too much in the as a catalyst. So what will C do? C will bond with A and B. और ये समझिए ए एंड बी के साथ बॉन्ड करके इसने इसको थोड़ा सा अनस्टेबल कर दिया, दैट बिकॉज इट इज हैविंग अ न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड हियर, बिकॉज एंड व्हाई द कैटलिस्ट इज गेटिंग बॉन्डेड विद ए एंड बी, बिकॉज कैटलिस्ट इज वेरी रिएक्टिव, तो कैटलिस्ट तो रिएक्ट करेगा. एंड व्हाट इट डज, इट एक तो सबसे पहले ए और बी को थोड़ा सा इसने रिएक्टिव बना दिया, एंड ऑल्सो व्हाट इट इज डूइंग, इट इज गेटिंग दीज टू थिंग्स क्वाइट नियर टू ईच अदर. दैट विल बी फीजिबल फॉर द रिएक्शन, दैट विल बी वेरी इजी फॉर द रिएक्शन. अब आसानी हो जाएगी रिएक्शन को होने में, ए और बी आसानी से क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, एंड दे विल फॉर्म ए बी, एंड द कैटलिस्ट विल बी एज इट इज हियर. ठीक है. So what it does, it gives a new pathway. Na? There is a new pathway for a reaction, and this pathway, it actually has lower activation energy, and that is why the rate increases. So you will write here, catalyst provides all of you understand how catalyst work? Yes or no, please tell me. A different, अरे हाँ ना, कुछ तो बताएं. Different reaction pathway. नहीं समझ में आया क्या किसी को? बता देगा इस चैट में, नहीं समझ में आया तो अंडरस्टूड. ओके, शाबिस को समझ में आया. Different reaction pathway with lower activation energy. Therefore, rate increases. And we will draw this one. ठीक है, चलिए. I'm coming in.
इरम तारीफ